concentrating on the content and not on the other things. So that would be helpful. Secondly, we don't have any, due to the shortage of time and the tenure of the webinar, we have not able to put any question answer session. So I request all the participants who have joined, if they have any queries, they can write back to us. We will always give them end of the webinar. We will give this entire video recording as well as the email ID where they can shoot mails. But it will be a very exciting session for all of us. So let me tell you that why we have thought of creating this session. And this is the second episode of our series, webinar series on retail fundraising model. So we have found that during this COVID-19, a lot of businesses, a lot of non-governmental organizations, they depend on retail sales have been, getting impacted or have got impacted because of footfall, not maximum footfall happening. So the marketplaces, wherever retail is there. So it is very important to find a way to overcome this. And we thought that if we have a session on this, lot of individuals in the sector can be benefited. And also we would also like to share our experience, what we have gone through with all this, and what we are proposing will be a game changer, to be honest, in resource mobilization or building your retail sales aspect of your organization. So this session is about hybrid model of retail fundraising. So this is nothing new. I think a lot of us have discussed that the retail strategy is all about face-to-face element, offline. So what we are proposing today is how mixing offline and online, you can reach to numerous audiences to whom you are not able to reach due to this COVID-19 situation, where social distancing and the physical contact is very less. So I mean to say that we are going to propose a strategy, or you can say a model, which will help you to reach your potential supporters or potential customers or potential financial supporters, donors, through this hybrid model. And that's why we named it as a hybrid model for retail fundraising. And again, I welcome all of you to this session, and that is how we will take it forward. So Ravi, over to you. Yeah, thank you, Dev. Good evening, everyone. This side Ravi here, and I am the co-host for this webinar. And now I'm going to talk about what we are actually like, what is Let's Rise first, and like what we do. So talking about Let's Rise, we are like consulting firm, and we have 27 years of combined experience in working with global non-profit setup and for-profit setup, and we have successfully helped and managed in-house individual retail fundraising processes along with digital and offline mobilization. We, as a vision, we can say we have a dream of working with various non-profits to strengthen their digital and offline retail fundraising sets up. Now, looking about how we want to engage further, we also look forward to enhance our learnings to build up the capacity on both digital and offline retail fundraising tactics. So this is our a small brief introduction about our organization, Let's Rise, which is a consulting firm again, and we help profits as well as non-profits in various ways. So in this webinar, as which is mainly focused on hybrid fundraising, so I will just take it forward from here. Yeah. So as you have gone through our ad, and thank you all for joining in a very short notice. I mean and as they've mentioned, it is our second series of our webinar, and this is more hybrid model we will be talking. As he mentioned, it will be a online and offline mix up, in the COVID, most of the the normal, the conventional ways of doing businesses, whether it is non-profit or profit or anything kind of setup, is going through many challenges. So what we thought of our out of our experience, like what we can give you in this, what you will get back, takeaways from this webinar would be, the first point will be we will be hybrid models. I mean, we will be discussing how hybrid models can work for non-profits in this challenging time of COVID-19.
The second thing will be, we will be sharing you the tick boxes checklist required for the success of this, what you need to be, to for the success of the model. The third will be, we will be discussing how we will be, achieving those uh, the steps. Fourth will be, what will be your USP, right? And at last we will, tell you like how we have been helping many other organizations like yours, and how, what is our success model. Yeah. So going forward now, we will be like, as mentioned by Dave, like, hybrid model means like we have, combined the process of online and offline. At the beginning we will be talking about the online mostly, because if we say like, in India, if we say the data of, online active users of internet, it is around 500 million, which is growing, and it is expected to be, billion users very near soon. Because, in India, and it in the COVID time also, the active user of internet has grown up. So when you're a non-profit setup, how you can take the advantage of online fundraising, so that we'll be discussing here. And these are the, so these are the things like we will be discussing in detail today, how you can do online fundraising. So there will be many components and many things in online fundraising, but we have selected the very essential parts, like your website, which is to be integrated with blog, the social media, which is always you are talking about Facebook, LinkedIn, Twitter, which will be the best for your users. What is crowdfunding in general, how you can, grow your partners digitally, and how you can, the low cost model of, engagement is the email, how you can use best out of it, in the low cost, and you can, grow your online fundraising. So this will be the thing we will be talking about. Now I will give over to the Dave, so how it can help in, overall in an offline way. So yeah, Dave. Thank you, Ravi. And friends, as you were hearing that the way Ravi was telling that how to reach your potential audiences, and here I'm saying that we need to reach the audiences are already there. They have not gone anywhere. The only thing is that the public or the customer or the donor or the prospective donor or the prospective prospects, they are all there, but they are not coming out. They are not visiting malls. They are not going everywhere due to this COVID. So where are they? So they are all present on the digital space. So we are saying that we are mixing this offline. So whatever we used to do offline, now we will do the same strategies on online. That means we will still reach to them, we will still talk to them, we will still present our cause to them, but on an online mode. So as all the 5 platforms which Ravi right now shared, website plus blog, means you have to have a website with a proper blogging strategy, where you can write blogs about your issue using keywords. Ravi will again explain in later slides. Then social media, using social media, how you will create the audience. Then crowdfunding, how will you amplify your issue to more donors. Partnerships, and lastly email. So all these platform, if is properly done, it will help the retail model. For example, the website and blog will help in creating awareness. For example, when we awareness to the retail fundraising strategy. So once the website is there, that means your branding, the story of your cause, the story of your product is out there, and that will bring in more people to your website. They will come in if we bring them with a proper hook. Secondly, it will also help in targeting your audience with a call to action. So social media will help to target your audience, and even branding. Then crowdfunding, as I said, that widen your reach and engagement for retail fundraising. And lastly, all these platform of website, blog, social media, crowdfunding, you can even generate leads, which will be later contacted by digital fundraising. Those potential leads will be your game changer. I'm saying that. So to get to those leads, the leads who are earlier were available in the market, but due to COVID, due to the social distancing, due to the economic clampdown, they are not going and buying things. So the purchasing power has become less on offline. But if you see in the last 1 year, the online marketing has gone up. That means all the customers,
they are on online. So we have, as a strategist, we have to go back on an online. And that's why this hybrid model of retail fundraising, which Ravi is saying, that we need to first establish the online mode and then build a bridge between the offline. And that is what hybrid model is all about. So over to you, Ravi. Thank you, Dev, for this. And going forward, now we will be talking about the each parameter, like what we discussed before, which are the key, key channels for online fundraising. So now we will be discussing in detail, like, when you have, like, I guess everyone has, website for their business or the non-profits they have. uh, Website is like your virtual organization where any, like, it is open 24 by 7. When you have a, very optimized website and you have a blog, you can change it. It will be like, game changer when it has, when the website is there and there is a strategy, like, behind it, there will be, like, more things can happen. What will be the tick boxes required for, a proper online fundraising driven website? So these are the checklist as per our experience, as per our, learnings, I will say, over the decades of, test and experiment and working in various organizations. What we have thought, these are the key things that your website must have. And so that, that will be your one of the, tool, or I will say what will be your weapon to, for fundraising. If your website is not, having these things, like, these properties, I will say, these essentials or the prerequisites, your website is like a virtual organization. I am repeating this word, it is your virtual organization. Nobody knows where is your office in online world. They don't come to your visit or website. But if your website is meaningful, it is, engaging, I mean, you will get the, most of the topic. So let's talk in one by one, like what your website should have. So these are the checklist, tick boxes for a optimized website for hybrid fundraising model in retail fundraising. So first point is creating a search engine optimized website for your organization is a very important steps towards, connecting audience digitally. What I mean by this, so, so, and what are the steps, like, I will be discussing the checklist, and also what, what are the, like, ladders to achieve that, steps to achieve that. I will be telling you, because most of them, most of all, like, who have joined this webinar, or your friends and colleagues must have, website. That is a very important thing. But many of us, spend a lot of money creating a website. Many of us, like, there are many fake, I will say, because I will give you honest answer. There are many fake agencies. There are many, maybe there are very reputed agency, but they don't, in the market there is very few people talking the real things. you know they will say XYZ, but, the main thing is also, you should know your audience, and you should have, regular auditing of your website. Auditing in a sense, the contents need to be modified as per time, and, whatever the audience you have, it should be engaging. You should always do this editing. And auditing is a very, I'm saying, it's a very umbrella kind of word. And auditing involves your technical analysis, your, Google Analytics, everything, like, how your website is really performing, whether your people are liking your website or not. Do you have you done this kind of, I hope you have done this kind of, auditing. And talking about the second step is keywords. Keywords is like, one of the very important factor. Like, there are, in if you talk about SEO itself, there are two parameters in SEO, which is called off-page SEO and on-page SEO. On-page is moreover where, optimizing your website, even your image. There are a lot of tags. There are, algorithms. I don't want to be more technical here, but I will say that very generic. Your website should be loved by Google. I am saying why Google, because Google is only the most popular search engine available. There are others, but their, market share is very less compared to the Google. So these are the steps you should must have. Without SEO, website is nothing. If you spend crores also on your website, and if your website is not able to, bring traffic through search engines, means you are lacking the point. So that is the number one thing you should have on your website. Now coming to the second thing, engaging content. Like, many people might have told you, and might you are also aware that content is king, right? If your content is not there, and if it is not engaging, I mean, it's the waste. I mean, people just, the bounce rate, like, people will come to your website, but they will not, just they will click and they will random. The bounce rate means, the
people will click, land on your page, but they will not read the content. They will find it annoying, right? So your content should be engaging, and it should be, driven to some tech actions on your website. Whether if you are having non-profit, people should, take action, like, donate online. The cause, the content should appeal them, so that, they can donate you, so that they can, support you in many ways. So what will be the steps for it? Like, first step, we always say, always understand your audience. If you don't have idea of your audience, means the content you are creating is waste, right? You should always understand the taste of your audience, what kind of content really engages them. There are, a lot of matrices, like, in social media or in the website I'm talking about here, mainly in website. If you have tools integrated, how people, like, from different parts of this world, where people are coming from, you, which page is the most engaging page of your website. So such kind of, analysis can be done. And we always support the content which have, storytelling capacity. Like, if you have gone through the website of, most popular NGOs in India or globe, like, Save the Children, UNICEF, WHO, there are a lot of other websites which, they tell the story in a very emotional way, right? That is more appealing, and the people feel, oh my god, like, they feel like, they connected to the issue. They create a content in such a way, they invest a lot of time. I will not say lot of money, but I will always say lot of, research and time, because time is also a very big investment. So if you don't invest time understanding your audience and, creating engaging content, it means you're losing the, opportunities. Now, talking about the blog is the most integral part. Like, many people think, like, blog is like text heavy content, whether it will help or not. But I will, as per my experience, working in different organization and different kind of tests I have done, if you have a blog, means you are creating a more source of traffic to your website. And what would be the steps to achieve this? Is always create, blog calendar, publish blog according to your audience, do some proper keyword research, and also, have a separate integration for blog. Like, sometime you can, have the micro, or you can say subdomain of your blog. You they In the blog you can have call to actions. There are a lot of things you can do if, when the blogs are on your website. You can create a lot of, and, always phrase contents are loved by, search engine. So if the blog helps in that. Now, coming to, responsiveness. What is responsiveness actually? It is like, I will say, in this modern a time, there are a lot of, device user, laptop user, desktop user, tablet user, mobile users. Now, if we vote among these all users, mobile users are the top. About, according to the research and data, 70% of the audience are on mobile. They use browsers, mobile browsers, mostly apps, mobile apps. 70%. Now remaining are the 30%. Now, if your website is not optimized according to the mobile, means you are losing the opportunity. Now, why I'm saying this, your website should always be, responsive, means they should fit the, device. It is very technical word. I mean, you must be aware also about it, but I'm saying this because if you're missing this, means you are missing the opportunity, like, of gaining the audience. Your user interface, mostly the UI of this space should be mobile friendly users. Now, talking about the last but not the least, I will say this is very important point for the website users. Your most website must have data collection matrices. Without in this way, data, after I will say, your content data will be, I will vote the data to be the biggest factor for your marketing plan, your, whatever the analysis you do. If your website is not able to, grab the data or collect the data at the back end, I mean, that won't give you, proper, making your plans won't be, complete without it. So there are many free tools. I hope you must be aware of. Your website should have analytics tools like Google Analytics. There are Facebook Pixel. A lot of things are there, but I will not say all into be integrated. But the key tool which is available for free, I will say Google Analytics should be integrated, and it is easy. Your developer can help on this. And if you're, these are, I mean, in the short, I will say these are the very essential point for a website. Since we have a lot of topic, I'm sorry, I'm a little fast, because we want to cover a lot of things and give you a, qualitative content in this webinar. So I'm little fast, but I hope, I am, hopeful we will connect in person to give you, in depth
details about these topics, because these are many vast topics. And the purpose of this webinar is to make you aware. I hope you are aware, but the key role you can play in this COVID, using this tool in a most better way, so that your fundraising can be more influential. Now coming to social media, what would be checklist, and what would be the steps? Like social media we always use, like Instagram, Facebook, Twitter. There are a lot of other social media coming up these days, LinkedIn. So what, how the non-profit, how hybrid model can be integrated with these all channels. There are a lot of people say social media, and it is proven fact that social media traffic is one of the highest traffic these days, for the website. If your social media pages are optimized, they are very high volume of followers, I mean, you can be the game changer in your whatever the work you are doing on. It will be very much it will be the big achievement, I will say, in short. Now talking about, like tick boxes or checklist for social media, what will be the best practices for social media to help in the online fundraising or hybrid retail fundraising? So talking about the first point, engaging. We always vote for engaging social media profiles. Some people, what happens, we create pages but we forget to do post for the people who follow us. That should not be. That is a very bad practice. Whether you have 10 followers or you have a 10 lakh followers or million followers, regular posts should be always there. Otherwise what happens, even this Facebook will not optimize your content. Even if you publish it, the algorithm is designed in such a way, if you don't have a regular post of content, your pages followers will go away, and even your page profile, whatever you have created, there is no use if the engaging and audience interest kind of things is not taken care of. Now talking about consistency in community growth, you should always focus on growing your numbers. Like some people you have looking on Facebook, they have 10,000 followers. Some people you see there for 1 lakh followers. Plan behind it, they have not achieved overnight. They have shared their content over the various channels. Maybe they have used their personal networks, they have invited their friends, family. So that's we should always, when we are social media user of company or profile or anyone, there should be consistency on the community growth factor. Because if your community is not stronger, it won't help in any way, any purpose. You can do any fundraising also in there. Suppose there are a lot of people following you, obviously, and then you have an immediate cause to raise the funds. The size of your community will determine the size of fundraising. I'm saying in figures. So now talking about the fundraising post, when you are doing any, like you might have seen the post of many biggest NGO. Again, I'm repeating them. They're like international NGOs. Mainly, I will say there are big. They have crores of followers, and they raise funds in crores. I'm telling you, and this is the truth. And we have seen the figure. We are not here boasting or roughing these things. We have seen this fact. We have done this fact. So your growth of community and your fundraising post, they are directly not proportional. Why I'm saying this? Because it depends how much people suppose if you are creating video content and you are posting on your social media channel, and then you have a click to click call to action like donate right on that post. Now what happens when the size of community is more, the people who love your content, who are engaged with your content, they will donate you because they know you first, because they are not cold audience. They are the one who have been knowing you. Like there's a kind of, I will say, the branding has been done properly to them. Now being responsive here, responsiveness means we should always, like you might have some agency working for you, or you are doing your in-house social media. What always you should remember, be responsive. Like people ask many questions on your social media messages, even comments, respond. So if you don't respond on time, you are losing most of the factor, like trust. People they will not love you, they love prompt responses. Like if they're asking you any queries related to your service or anything, a prompt response is the must. Now the most important, I will now talk about this promoting pages and paid ads. Promoting page means see, nothing can happen all organic. That is also like a different term I'm using here for hybrid kind of marketing here, and but that will help in hybrid model of fundraising.
promoting page, I mean, there should always be a mix of inorganic and organic marketing. I mean, using of paid ads. Why this? Because most of the social media, they don't allow you to reach your own audience. Algorithm is designed in such a way, you cannot reach even the 10% of your followers, even your content is good. So always the mix, we have to sponsor or boost it, our content to the targeted audience, so that the achievement, like suppose if you are doing a fundraising campaign, and we have a post done on Facebook, Twitter, LinkedIn, anywhere, and we can with the help of paid ads, we can reach wider audience with the help of objective settings, targeted audience, appealing content, like most of the things can be done. And this can be only done when we have a certain marketing budget for that. See, because nothing is here, obviously I will say organic is good, but without inorganic you cannot have that balanced kind of ecosystem for your social media. And these are the key checklist, and these are the key steps I have put on for your references. Now coming back to the third and most important thing, like crowdfunding. There are a lot of platforms. In India, if I will say, there are platforms who have raised thousands of crores through crowdfunding. I'm just giving you example of Give India, Keto, Impact Guru. There are a lot of I'm talking about mostly non-profits here. So crowdfunding, if we tell, it's like many people giving small bits of money to your cause, and then you achieve your goal of doing some impactful work. Now talking about crowdfunding, see, the money can't pour in. If you have appealing cause also, the most important thing, like the checklist we have mentioned here, these are very important things for any non-profits to follow. Mostly they will, you can create a profile. So after creating audience, sometime there are a lot of factors people miss when they are writing content on crowdfunding campaigns. They don't have marketing, where to share, how to get the fund. A lot of things they these people, they miss out because they don't know. And even the crowdfunding platforms, see, they are just a marketplace, I will say. But there are many things you need to learn. I mean, to know how the crowdfunding is done, there are a lot of best practices. Some crowdfunding platform, they may choose your content for marketing, but most of the time they don't pick up. What would be the best solution and steps toward would be, there should be problem statement. Like whenever you are raising, suppose you want to raise fund to educate 100 girl child in rural village in India. Suppose this is the campaign, I'm just giving you a small example here. And but you don't have a good appealing content from the ground of girl child, what kind of problems they are facing, why you need the money, how your money will going to change their life. These kind of questions are not answered through the meaningful and impactful content. And then there's no use. Like if you create a campaign, it was not going to work. Because what happens, audience trust, digital audience only trust the way the presentation is done, where the content is designed. So that is how it is done. And what would be the steps we have always mentioned here? See, we always vote for the video content. Why video content? Because they are more engaging, they are more impactful. And also for crowdfunding, the most important point will be how you are marketing it, how you are reaching, how you are sharing. See, after a certain level, you will exhaust. There will no people seeing your content or donating. So you can always approach to influencers for your how you can help them. Like you influencers here means YouTubers, bloggers, there are Instagram influencers. So many people do for help, but you have to reach them, you have to ask them, like these are the cause that we want to collaborate with. So that will be helpful in your crowdfunding campaigns. Now going to partners, I mean affiliate partners. This is a very important point. Why I'm saying this, um, we need partners, like whether it is a small agency, profit, non-profit, whether it is like talking about the more important part is the hybrid fundraising model. We need partners to grow in this model. We need a good database, a good number of digital partners, promoters, to help us grow our reach. Like
we should always collaborate with digital influencer. There are many, like-minded people who wants to help. There are people who are bloggers, Instagram, as I mentioned. There are people who can help you launch virtual events, like, people raising funds on behalf of you. I mean, organizing, like, virtual event where people can register by paying the, ticket fee, and then, you can, take that, ticket fee as a donation for your campaign. So we have done this. We have raised, millions of rupees in the campaigns, like, organizing these digital campaigns and digital events, because in the COVID time, virtual events have been grown for, non-profits. This virtual event means, there are, people coming, doing some, like, suppose I will say teaching some yoga classes online, and the ticket, the money they charge, is on to the non-profits. So there are a lot of, collaboration you can do in that way, and, create a partners. You have a pool of volunteers also to, help you, and people who are helping you, you should always reward them, because for non-profits, it's always the reward is the best form of, appreciation. Even if your donors, like, you can engage with your donors, prospects, your whatever the list, digital, if your friends, close networks can help you, because these is where, your content is going to, reach. And what are the steps? Actually, there should be, list building practice within your organization. You should always make your list, like what kind of partners you need to, promote your campaign. You should, like, niche building means, finding, similar, like, like-minded kind of people who are into your business and can help you, build your network. You can also do webinar series, a video, I will say video campaign, or, like, educating. Like, suppose you want to do a non-profit campaign on girl child education, you can show the problem, what girls over the India are facing as a problem, and what your organization is doing to, change that problem and creating an impact out of it. You can have, better volunteer. There are many people who want to volunteer for your non-profit cause, and which can help you in hybrid model of fundraising. So always best thing is to, reach them, create a better strategy, make a list, and help, grow in the digital form of, retail fundraising. Now, last but not the least, always engagement come first. You should have the tool for engagement, and checklist for, email. Why I'm telling email here? Because, your email is the low cost form of engagement, but it's also very influential. If your list is active and engaged, you can make, database of your donors, prospect. Obviously you will be doing this, but there are certain, kind of, you should always do it proper plan, proper, engagement plan, I'm saying here. Proper segment is of your database should be there. You should update your link. You should use, like, tool like Mailchimp. There are a lot of tools, marketing tools, but, email, why I'm saying email is the low cost form of communication. And many people now, there is WhatsApp, or even in the past we had SMS and all kind of thing, but still email has not gone out. Email is still one of the influences. Obviously the open rates are low, I will say, but it's not that it is gone off. You can have your, it always depends of how much, you're engaged, how much they like your brand, your cause. So email, and what kind of email template you use, what kind of messaging, you use, what kind of, like, how to make your most active list of, email list. That is all depending, like, how you can, make it as an influential tool for engagement. Now, how you can build steps for it will be, like, source. Where is the source coming for your traffic? You can have, email calendar. You can also have, profiling of your audience. And always you should clean your database, subscriber, unsubscriber. These days you cannot, just boost your email. You should must have a proper opt-in also, as per, try guidelines. And, you cannot create, like, cold audience and shoot them an email. That is very unethical practice. You should have an opt-in, and whatever the list you have, you should engage them in a better way. You can take example of many e-commerce companies. I'm giving you little off-road examples, because they, might your email box, you on daily basis, you check your email box, and a lot of, companies sending you email on different topics. But, what happens? The email they love, the people who are your donors, who are supported you, and they want to hear from you. So email has not died yet. It is still in the market, it is alive. But, the how to use it is all up to you. Like, how you're using it, how you can make a best out of, for fundraising appeals. You can have one monthly fundraising emailers going
on salary date, invite Dave Yeah, going thanks, Ravi. on the Thanks. session forward. Yeah. Thanks, Ravi. Thanks, Ravi. And I think once जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगा ना, आप स्लाइड्स को आगे लेते जाइएगा. सो दोस्तों, आप लोगों ने सुना जिस तरह से रवि ने आपको कहा कि किस तरह से हमें हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पहले अच्छी तरह से बिल्ड करनी चाहिए, जो कि हमें हमारे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स को हेल्प करेंगे. अभी ये हमने जो सारा जो हमने ये कहानी सुना, ये हम क्यों कर रहे हैं, हमने क्यों बता रहे हैं? ये इसलिए बता रहे हैं कि हमें अपना रिटेल फंड रेजिंग स्ट्रेटेजी, जिसको कहा जाता है कि जहां पे बहुत सारे लोग छोटे रकम या छोटे अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो हमको उन तक पहुंचना है. अब हमको उन तक पहुंचना है, उनको हमें अपनी कहानी बतानी है कि हमें आपका कंट्रीब्यूशन क्यों चाहिए और आपका कंट्रीब्यूशन हमें लंबे समय तक चाहिए. हमें आपका छोटा छोटा रकम चाहिए जो कि हमें एटलीस्ट 2 साल या 3 साल तक कंट्रीब्यूट करे. इसका मतलब ये है कि हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है उसमें हमने ऐसे स्टोरी हमें क्रिएट करना है जिसमें हमको ये बताना है हमारे ऑडियंस को कि हम आपको इस इश्यू के लिए आपसे हम सपोर्ट चाहते हैं, और अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आपको ये फायदा होगा, आप समाज को ये फायदा होगा, और आपके कंट्रीब्यूशन से हम ये गोल को अचीव कर पाएंगे. और इसीलिए रिटेल फंड रेजिंग प्लस ऑनलाइन फंड रेजिंग को एक साथ मिला के हम बोल रहे हैं हाइब्रिड मॉडल. तो हाइब्रिड मॉडल का मतलब, जो रिटेल फंड रेजिंग का मॉडल का मतलब होता है, बहुत सारे लोग छोटे छोटे रकम देंगे और वो हर मतलब रेगुलरली देते रहेंगे, एक बार दे के भूल नहीं जाएंगे. अगर हमने उनसे नाता जोड़ा है तो वो लंबे लंबे टाइम तक वो नाता जुड़ता रहेगा. रवि, नेक्स्ट स्लाइड. जी. अभी आपको तो रवि ने बताया कि जो ये जो 5 प्लेटफॉर्म्स है, बस रवि रुक जाइए, अभी वहीं तक रुक जाइए. 5 प्लेटफॉर्म्स आपको आपको रवि जी ने बताया है कि हमको वेबसाइट बिल्ड करना है, हमें ब्लॉग लिखना है, हमें क्राउड फंडिंग करना है, हमें सोशल मीडिया करना है, हमें ईमेल करना है. वो क्यों करना है? क्योंकि अगर आपको याद है, शुरू में हम आपको बता रहे थे कि हमें हाइब्रिड मॉडल तैयार करना है. तो ये जो हम सारे जो यज्ञ, ये जो हमने यज्ञ किया कि हमने ये हमारा वेबसाइट को तैयार किया, हमने हमारा ईमेल प्लेटफॉर्म तैयार किया, हमने सोशल मीडिया को तैयार किया, हमने क्राउड फंडिंग किया, हमने पार्टनरशिप पे काम किया. क्यों किया? क्योंकि हमें उन लोगों तक हमारे कहानी को पहुंचाना है, वो कहानी जो कि जिंदगी बदल सकती है. तो अगर वो कहानी जो जिंदगी बदल सकती है, अगर हमने हमारे जो पोटेंशियल प्रोस्पेक्टिव डोनर से उनको हम बता पाए, तो मुझे लगता है कि हम आने वाले टाइम पे इनको लंबे समय के लिए हमारे कॉस्ट के कंट्रीब्यूट करा पाएंगे. अभी देखिए, जब मैंने ये बात कही आपसे कि हमें बहुत सारे लोगों से छोटे रकम चाहिए और वो लंबे समय तक चाहिए, ये क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आपको पता है, जो यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल गोल्स हैं, 17 गोल हैं, उन 17 गोल्स हर संस्था, देश में हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी सोशल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, वो ये 17 गोल्स पे काम करती है. और ये 17 जो गोल यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट गोल्स है, इसको 2030 तक पूरे देश में, पूरे विश्व में इसको लागू करना है. और ये जो 17 गोल्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ. पहला गोल है नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी हटाओ, देश से गरीबी हटाओ, दुनिया से गरीबी हटाओ. सो जो भी संस्थाएं इस पे काम करती है वो इसको अचीव करेंगी. दूसरा है कि जीरो हंगर, मतलब किसी को भूखा ना रहने दे. तीसरा है अच्छा स्वस्थ और अच्छा जीवन जापन. चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, जिसका मतलब है हमारा पढ़ाई, जिसमें हमें क्वालिटी, सबको शिक्षा मिले, एक एक बहुत ही ऊंचा दर्जे का शिक्षा मिले सबको. और पांचवा है जेंडर इक्वालिटी, जो हमारे समाज में या विश्व में हर प्रकार की जो इनइक्वालिटी है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर को लेके, महिला पुरुष, और जो भी जो तीसरा जेंडर है उसको लेके, वो सब नहीं रहना चाहिए. फिर छठा है गोल है साफ पानी और सैनिटेशन, मतलब हाइजीन हाइजीन. उसके बाद है ऑल्टरनेटिव
ऑल्टरनेटिव एंड क्लीन एनर्जी। इसका मतलब है कि अगर सौर ऊर्जा के ऊपर हमें आगे बढ़ना है, देश को और दुनिया को आगे लेके जाना है। उसी तरह से 8वां गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब सबको अच्छी नौकरी और अच्छा तरह से उनको आगे बढ़ाएं। 9वां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट मीन्स कि हमारे जो देश में जो इंडस्ट्री है या पूरी दुनिया में इंडस्ट्री को, उसको किस तरह से हम अच्छे तरह से उसमें आविष्कार के जरिए, उसमें नए नए स्टेप्स के जरिए उसमें इंप्रूवमेंट ला पाए। 10वां है जो हमारे असमानता है समाज में, उसको हम कम करें। 11 है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, मतलब हमारे शहर गांव ये सारे सस्टेनेबल हों। 12वां है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। हम जिस तरह से जिस तरह से हम चीजों को बेचते हैं, खरीदते हैं, खाते हैं, फेंकते हैं, उस पे हमको बड़े बड़े नजदीकी से सोचना पड़ेगा और समाज को बेहतरी लाना पड़ेगा। 13 नंबर पॉइंट है क्लाइमेट एक्शन। जिस तरह से हम पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको किस तरह से कम करें, हमारे क्लाइमेट को, हमारे परिवेश को हम बचाएं। 14 है लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जो जीवन है उसको हम संरक्षित करें। 15 है जमीन के ऊपर जो जीवन है उसको संरक्षित करें। 16 है हम चारों ओर समन्वय और शांति का परिचय दें। 7वां है कि हम एक दूसरे से पार्टनरशिप करें और उन गोल्स को अचीव करें। तो ये 17 जो गोल्स है सस्टेनेबल गोल्स, अगर हमने इनको प्रॉपरली हमारे कॉज के साथ जोड़ के इंडिविजुअल के सामने रखे तो हम उन तक पहुंच सकते हैं। तो अभी रवि जी ने जो भी 5 स्टेप्स कहे, उन 5 से जो हम करेंगे वो करेंगे कि हम लीड जनरेशन करेंगे। आप देख रही है वर्चुअल फंड रेजिंग है, हम ईमेल पुश के द्वारा मार्केटिंग पुश और सोशल मीडिया मार्केटिंग दोनों को मिला के हम लीड जनरेशन करेंगे। और ये लीड जनरेशन कौन हो गए? ये लीड जनरेशन हो गए टारगेटेड ऑडियंस। और ये टारगेटेड ऑडियंस के जब लीड जनरेशन करेंगे, ये हम इनको कहेंगे कि आप सेल्फ शेड्यूल अपॉइंटमेंट्स में आइए। मतलब ये जो लीड जनरेशन हम करेंगे, इस पे प्रोस्पेक्ट जो हमारे एडवर्टाइजमेंट देखेंगे ईमेल से या सोशल मीडिया से, वो खुद क्लिक करेंगे हमारे से बात करने के लिए। हम उनको नहीं कहेंगे, वो खुद इंटरेस्टेड होकर हमसे अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे हमारे साथ। और उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो किस प्लेटफॉर्म से हमसे बात कर सकते हैं। गूगल मीट, जूम मीट, स्काइप मीट, फोन कॉल। इसका मतलब है जैसे ही वो हमसे ये 5 प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन में बात कर रहे हैं, अब इसकी हमें जरूरत ही नहीं होती अगर हम कोविड ना होता, हम तो उनसे फेस टू फेस जाके बात कर सकते थे। तो हम बोल रहे कि हम घर में बैठ के हमारे मोबाइल फोन और लैपटॉप में बैठ के उनसे हम बात करेंगे हमारे इश्यूज को लेके, और फिर उनको हम हमारे स्टोरी से फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर्स के लिए अपील करेंगे। तो ये प्रोसेस, यही प्रोसेस है, यही माध्यम है जिसको हम कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल। क्योंकि अगर आप ये सेल्फ शेड्यूल अपॉइंटमेंट्स हटा दें तो लीड जनरेशन अगर होगा तो टोटली ऑनलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑफलाइन जो एलिमेंट है, जो ऑफलाइन का जो सेक्शन हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, वो है ये सेल्फ शेड्यूल अपॉइंटमेंट और गूगल मीट में। तो यहाँ पे आप दूसरे प्रोस्पेक्ट को आप फेस टू फेस देख पा रहे हैं डिजिटली, वो आपको देख पा रहे हैं, आप उनको देख पा रहे हैं, तो उनसे आपको पर्सनल कनेक्ट मिल रहा है। तो उस तरह से फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, अगर आप महीने में अगर अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो ईमेल पुश और सोशल मीडिया मार्केटिंग से 100 लीड जनरेट करते हैं, और अगर 100 लीड में से आप सोच लीजिए 60%, क्योंकि ये लीड क्या है कि खुद आ रहे हैं और वो खुद सेल्फ शेड्यूल अपॉइंटमेंट फिक्स कर रहे हैं, तो इनका जो सक्सेस रेट होता है आने का वो 60 to 70% होता है। और मेरे हिसाब से अगर 100 में से 70 लोग आपसे बात करने आए, और अगर आपने अपनी स्टोरी, आपकी जो कहानी है, उस पर आपने प्रॉब्लम, सोल्यूशन और उससे फायदा क्या होगा अगर ये सही से बताया, तो मुझे लगता है 70 में से एटलीस्ट 50% आदमी आपको कंट्रीब्यूट करेगा। और वो क्या करेगा? वो जो अपील होगा वो होगा रेगुलर कंट्रीब्यूशन के लिए। तो सोचिए अगर 70 में से 50%, 35 लोग आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, 35 लोग अगर आपको, सोचिए मैं मिनिमम पकड़ के बोलता हूं, 100 रुपया प्रति माह कंट्रीब्यूट करते हैं 24 महीने के लिए, आप कैलकुलेशन लगा लीजिए। और ये आपको हर महीना करते रहना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर महीना 1 पे आपने 100 लीड जनरेट किया, उससे आपने बात किया, तो उससे आपको 20 डोनर मिले। उसी तरह से महीने 2 में आपने फिर से 100 लीड जनरेट किया, उनसे बात किया, फिर 20, तो साल के एंड में आप देखेंगे आपके पास 20 करते 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 आपके पास 20 × 12, तो आपके पास उतने डोनर होंगे जो आपको हर महीने दे रहे हैं, विच इज हेल्पिंग यू टू, मतलब आपको अपना लेजिटिमेसी, जो मुद्दा है कि जो इश्यू के लिए काम कर रहे हैं उसके लिए हेल्प करेगा, और वो आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को वो करेगा। और यही हमारी
एक्सपर्टीज है, यही हम करते आए हैं पिछले 2 सालों से, 5 सालों से, 15 सालों से। और हम खुद इसको हम लोग इस इशू को फेस कर रहे हैं कोविड में, और हम सोच रहे हैं कि ये एक तरीका हो सकता है उसको तोड़ने का। क्योंकि रिटेल सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट से कितना बात कर रहे हैं। तो यही चीजें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। और इसको अचीव करने के लिए, ये इस स्टेज तक आने के लिए, वर्चुअल फंडरेजिंग का लीड जनरेशन तक आने के लिए, आपको जो रवि जी ने जो 5 स्टेप बताए हैं, वेबसाइट ठीक करना होगा, आपको अपना सोशल मीडिया ठीक करना होगा, आपको अपना एफिलिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी ठीक करना होगा, आपको अपना ईमेल स्ट्रेटजी ठीक करना होगा, तभी जाके आपको क्वालिटी लीड मिलेंगे, क्वालिटी लीड जनरेशन होगा। और ये लीड जनरेशन वो लीड जनरेशन होगा जो कि सोचिए जिनका उम्र 35 साल से ऊपर होगा, और जिनकी इनकम, और आप ऐसे कर सकते हो मार्केटिंग, जिनका इनकम लीजिए 10 लाख से 15 लाख एनुअल होगा। अगर ऐसे लीड जनरेशन हो तो उन लोगों के लिए 200, 300, 500, और वो ऑलरेडी कॉज को सपोर्ट करते हैं, सेवरल कॉजेस। तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है ये स्ट्रेटेजी। और इसी तरह से हम इस चीज को हम एस्टैब्लिश करते हैं, और हम सोचते हैं कि अगर ये लर्निंग हम आपसे शेयर करें, आप इसको और आगे ले जा सकते हो। आप हमें, क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं इसके, या तो आप हमसे मिलके काम कर सकते हो, आप हमें हायर कर सकते हो, आप हमें हमसे मिलके इस एक टेस्ट कर सकते हो डिफरेंट सेक्शंस में, अगर आपके कैपेसिटी है आपके पास। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस पे अगर आप इस जो फंडरेजिंग एस्पेक्ट है वो हमेशा से एक चीज पे डिपेंड करेगा कि आप कितने बार टेस्ट करते हो और कितने बार फेल करते हो। ये जिस तरह से रवि ने कहा कि ये ऐसा सेशन नहीं है जो आप करने से आपको रातों रात आपके कंट्रीब्यूशन आपको बढ़ा देगा। ये एक प्रोग्रेसिव ग्रोथ पैरामीटर है जो आपको हर स्टेप्स में आपको इन्वेस्ट करता रहना पड़ेगा, मतलब आपको स्ट्रेटेजीज में चेंज करते रहने पड़ेगा, तब जाके लीड जनरेशन आएगा। और लीड जनरेशन अगर आ गया तो हम अगर सोचते हैं कि अगर आपका कॉज है, उस कॉज के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसके लिए बात करते हैं, तो क्योंकि हम इसको कर रहे हैं तो हम आपको ट्रेन भी कर सकते हैं, तो हम आपके मेंटरशिप भी कर सकते हैं, मेंटर भी बन सकते हैं कि किस तरह से इसको आगे ले जाए। ये हमारी जो सेटअप है लेट्स राइज, ये हमारी स्टार्टअप है, और हम सोच रहे कि हमारे पास जो एक्सपीरियंस है हम सब में इसको बांटे, और हम दुनिया में जो चैलेंजेस हैं, ये जो हमारे 17 गोल्स है, सस्टेनेबल गोल्स, जो भी संस्था के हैं, जो भी, और हर संस्था इन 17 गोल्स पे कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई है, काम करते हैं, हम देश और पृथ्वी को किस तरह से बेहतर बनाएं, और यही हमारी उद्देश्य है। रवि नेक्स्ट स्लाइड। अब आपको बताएंगे हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, हम आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, डिजिटल प्रमोशन और रिटेल मार्केटिंग सोल्यूशन। हम आपके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, अगर आपकी खुद की टीम है या आप खुद हमसे सीखना चाहते हैं, हम आप एज ए कोच हम आपको सिखा सकते हैं कि किस तरह से करना है, क्या नहीं करना है, किस चीजों को लेना है, किस चीजों को नहीं लेना है। नहीं तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप हमें पूरा अधिकार दे सकते हैं कि हम आपके लिए आपका प्लान बनाएं, आपके संस्था के लिए किस तरह से हाइब्रिड प्लान बनाएं, और किस तरह से उसका बजटिंग करें, किस तरह से उसका रिपोर्टिंग करें, आप सब कुछ हमें दे सकते हैं, हम उसको प्लान बना के दे सकते हैं। हम आपके लिए रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि आपकी संस्था के लिए लोग चाहिए, तो हम उसमें भी आपको हेल्प कर सकते हैं कि हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी हेल्प कर, क्योंकि हमें समझ है कि नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर या फॉर प्रॉफिट सेक्टर में किस तरह के लोग चाहिए होते रिटेल में। सेकंड, हम लोग आपके लिए सेल्स पिचेस भी तैयार कर सकते हैं कि क्या बोलना होगा, क्या आपका सेल्स पिच सही है, क्या आपके सेल्स पिच क्लियरली बता रही है कि क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है, और कौन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से फायदा किसको होगा, क्यों, और उस फायदे से क्या होने वाला है देश को या दुनिया को। अगर ये क्लियरली हम आपको हेल्प कर सकते हैं, या और लास्टली हम आपको ओवरऑल सारा पूरा काम भी करके दे सकते हैं रिगार्डिंग डिजिटल एंड रिटेल। तो ये हम सर्विसेज ऑफर करते हैं, हमारे में एक्सपर्टीज है। तो आप हमको मेल कर सकते हैं, हमसे एक और सेशन कर सकते हैं जहां पे हम एक गूगल मीट में या जूम मीट में बात कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारी एक्सपर्टीज आपको हेल्प कर सकती है। और ये हमारे से जुड़ने का तरीका है। हम लोग, हमारी ऑफिस बैंगलोर में है, लेकिन कोविड के चलते हम गुड़गांव, दिल्ली,
हम बैंगलोर सब जगह से काम करते हैं। हमारा फोन नंबर है, हमारा ईमेल आईडी है। मैं ये भी कहूंगा, जब आप लोगों ने इस रजिस्टर को रजिस्टर किया वेबिनार को, तो आप लोगों को ईमेल आईडी मिला होगा। ये हमारा ईमेल आईडी, आप इसमें ईमेल कर सकते हैं info@letsrise.com। ये हमारे फोन नंबर्स हैं, आप इसको सेव कर सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ये हमारा कम्युनिकेशन एड्रेस है। अगर आपको कुरियर भेजना है, कुरियर भेज सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो ये मुहिम है ये चलती रहेगी। तो मैंने जैसे आपको कहा कि ये हमारा दूसरा एपिसोड है, हम इस तरह से सीरीज ऑफ एपिसोड करेंगे। नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में हम शायद और डीप में जाएंगे, और उसको कैसे करेंगे, हाउ वाले प्रोसेस को हम बताएंगे कि ये करने के लिए ये करना पड़ेगा, कैसे करोगे, क्या चूज करोगे, कौन सा प्लेटफॉर्म करोगे, क्या सही है क्या गलत है। तो वो हमारे सीरीज रहेंगे, और हमें हमसे जुड़े रहिए। आने वाले समय में और वेबिनार आएगा जो आपके इश्यूज को या आपके स्ट्रेटेजीज को और मजबूत करेगा। मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन या आज का जो ये हमारी बातचीत रही, ये काफी थोड़ी डिटेल थी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग इससे काफी बेनिफिट हुए होंगे। और जिस तरह से मैंने कहा था कि रवि ने जैसे कहा था कि आज आप इस वेबिनार से क्या ले जा पाएंगे, अगर आपको क्लियरली याद है, हमने कहा था कि कौन से हाइब्रिड मॉडल्स काम करेंगे। तो हमने आपको एक जो सबसे टेस्टेड हाइब्रिड मॉडल है, वो जो कि सक्सेसफुल है, वो आपको दिखाया। तो हम आपको ऑलरेडी टेस्टेड मॉडल दिखा रहे हैं। तो ये मॉडल आपको काम कर सकता है, जो कि मैंने बताया था लीड, जिस तरह से 5 आपके प्लेटफॉर्म को पहले तैयार करना है, और फिर आपको लीड जनरेशन करना है, फिर बाद में उसको रिटेल रिकरिंग गिविंग के लिए आपको आपका स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है। तो ये क्लियरली है। सेकेंड, हमने कहा था कि आपको ये पता चलेगा कि क्या स्टेप्स क्या है, चेकलिस्ट क्या है, जो रवि ने आपको हर स्लाइड में आपको बताया था, चेकलिस्ट ये होनी चाहिए जरूरी। और थर्ड, हमने बताया था क्या स्टेप्स है, क्या क्या है जो आपको, उसमें भी रवि ने आपको बताया स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप ऐसा करके आपको स्टेप्स बताया। चौथा था, हमने बोला था, आप याद रखेंगे, कि यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। देखिए, जो हमारा पूरा प्रेजेंटेशन था, अगर आपने इसको ध्यान से अगर सुना होगा या नोट किया होगा, आपको समझ में आएगा कि हमारा यूएसपी हम क्या कहना चाहते हैं। यूएसपी है ऑडियंस, प्रॉस्पेक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका स्टोरी क्या हम ऑडियंस के हिसाब से लिख रहे हैं, क्या अगर आप उस ऑडियंस के, अगर आप उनके जगह में होते, क्या आप हमसे जुड़ते, फॉर एग्जांपल क्या आपके कॉज के लिए आप जुड़ते, उस तरह से हमें देखना होगा। ऑडियंस के जूतों में घुसना होगा, उनके जूते पहन के या उनके टोपी पहन के, हमें उनके चश्मे पहन के हमें देखने होंगे। तो यूएसपी उस तरह से तैयार होता है। और लास्टली हमने बताया था सर्विसेज, जो आपने आपको बताया कि 6 सर्विसेज हम कर सकते हैं। आपको मेंटरशिप दे सकते हैं, आपको हम हेल्प कर सकते हैं आपके स्ट्रैटेजी में, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको देखना है कि आप हमसे क्या सर्विस ले सकते हैं, और आपके बजट के अनुसार, आपके आपके कैपेसिटी के अनुसार। और आप ये भी कह सकते हो कि आप अपने फ्रेंड्स को बताइए, आप अपने नेटवर्क में बताइए कि ऐसे एक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लेट्स राइज जो बोल रही है हाइब्रिड मॉडल सक्सेसफुल हो सकती है। तो एक टेस्ट भी आप कर सकते हैं, हमसे बहुत लोग और को भी आप जोड़ सकते हैं, और इशू को और भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं, और हमें और बेहतर होने में हेल्प कर सकते हैं। तो हम वेबिनार के एकदम एंड पे आ गए हैं। हम चाहते हैं कि आज, और हमें लगता है कि आप लोग को बड़ा अच्छा से आपने इसको समझा होगा। और अगर नहीं भी समझा होगा, कि हम आपको इसका रिकॉर्डिंग भेजेंगे पूरा, आपके पास रहेगा। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, जहां पे हम ऑलरेडी और हमेशा पोस्ट करते रहते हैं नए नए स्ट्रैटेजी, नए नए टॉपिक्स। या अगर आपको लगता है कि आप हमसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, तो फोन नंबर आपके स्क्रीन पे मौजूद है, आप इसको नोट कर लीजिए। आप ईमेल मौजूद है, आप हमको मेल कर सकते हैं। हम ऑलवेज अवेलेबल है आपको हेल्प करने के लिए। और इसी के साथ मैं रवि को बहुत बड़ा धन्यवाद देता चाहूंगा। रवि और मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा जिन लोगों ने आज इस वेबिनार को सक्सेसफुल बनाया। उसी के साथ गुड नाइट, एंड आई विश एवरीवन अ ग्रेट डे टुडे। Ravi, over to you if you want to help. Thank you everyone giving your valuable time. आपने अपना समय दिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप, इससे लगता है कि आप कितने मोटिवेटेड हैं और नई चीज़ों को सीखने के लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट, एंड विल बी इन टच एज पर कम्युनिकेशन वी हैव सेड। हम आपके साथ हैं, और यस, गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अगेन। Yeah, thank you very much. Bye.